So after 18 years, India gets a sovereign credit rating upgrade. Hello and welcome to Lukmaan IAS. In this video, we'll be talking about the recent development which has happened, which India has been striving for, and in the Economic Survey 2021, it was talked that India deserves a rating upgrade. So in this video, we'll be talking about what is a sovereign credit rating and what are the parameters behind which any particular government gets a credit rating upgrade. Apart from that, what has been seen by Standards and Poor about India and how it will benefit the Indian economy. So let's start the video. So first, what is a sovereign credit rating? अब अगर हम सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी बॉन्ड को इशू करती है, बेसिकली दे आर टेकिंग अ डेट. अब कोई भी इन्वेस्टर डेट तभी देगा किसी को क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बोरोवर हो गई. अब वो पैसे जब उठा रही है तो जो पैसा जिसने लगाया वो तभी लगाएगा जब किसी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी. सो व्हाट इज अ क्रेडिट वर्दीनेस? क्रेडिट वर्दीनेस इज द विलिंगनेस टू रीपे द डेट. विलिंगनेस टू ऑनर और रीपे द डेट. क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट वापस रिकवर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन एनी डेट. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, a particular government, whether they have sound financials or not, that depends upon how highly rated they are. अब अगर किसी का डेट रेटिंग बहुत अच्छा हो, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉन्ड का रेटिंग बहुत अच्छा होगा, ऑब्वियसली देन देयर इज अ रिस्क्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड आर लेस. अब अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगा. अब रिटर्न इस सेंस में होता है कि गवर्नमेंट जब बॉन्ड्स इशू करती है तो उस पर एक इंटरेस्ट देती है जिसको कहते हैं कूपन रेट. अब अगर कोई बॉन्ड बहुत अच्छा है देन दैट मीन्स कि उस पर जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को देना है दैट वुड बी लेस, एंड दैट इज हाउ जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो डाउन हो जाता है. अगर गवर्नमेंट साउंड है उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डाउन होगा क्योंकि उनके बॉन्ड्स के रेटिंग हायर है. अगर गवर्नमेंट के फाइनेंशियल साउंड नहीं है, उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होगा, उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि उनके बॉन्ड की रेटिंग पुअर है. एंड दीज रेटिंग्स आर डिफाइंड बाय द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. एंड देयर आर 3 ग्लोबल सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज. दीज आर स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच. And the parameters, we'll be talking about different parameters behind which these particular ratings are done. The core essence is likelihood of default. Whether the debts at the end of maturity, whether the principal amount would be repaid back or not, that is the likelihood of default. अगर default का criteria ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि principal amount वापस कभी आए ही नहीं. And the ratings are defined in 2 broad criteria. First is investment grade, second is speculative grade. Obviously investment grade से पता चलता है कि अगर हमने इन तरह के बॉन्ड्स में, इस तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उनकी जो डिफॉल्ट रेट्स हैं वो कम होगी पॉसिबिलिटी, और इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट के पर्पस से किया है, उनका एम है कि यहाँ पे प्रिंसिपल भी वापस आए और साथ में उनका इंटरेस्ट जो कूपन है पेमेंट्स है वो भी रिसीव करे. और स्पेक्युलेटिव ग्रेड रेटिंग का मतलब है देयर इज हायर लाइक्लीहुड ऑफ डिफॉल्ट एंड व्हाटसोएवर इज द रिस्क इज बीइंग टेकन बाय द इन्वेस्टर, इट्स अ चांस दैट दे मे their principal amount may get stuck. Now coming to the next part, what are the criteria which are seen by sovereign credit rating agencies to make sure that a particular bond by for the government is rated higher or not? तो उसमें 2 criteria broadly होते हैं. The first is gauging the macroeconomic indicators and second is non-economic indicators. As we say that macroeconomic indicators which are very important, the first is GDP growth rate, the real GDP growth rate. What is the
average growth rate which the country has been experiencing over the past 5-10 years, and what are the potential growth rate which the country is expected to achieve. This is an important parameter. Apart from that, the government debt, this is debt to GDP ratio. What is the overall accumulated debt as a proportion of total GDP? अब इस पे गवर्नमेंट का जितना डेट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया का करंट डेट टू जीडीपी रेशियो इज अराउंड अबाउट 80%. देयर आर मेनी कंट्रीज जिनका 70-60% है, देयर आर मेनी कंट्रीज जिनका 100% प्लस है. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज अगर डेट बहुत ज़्यादा होगा गवर्नमेंट पे तो इंटरेस्ट पेमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा होगा इसका मतलब कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट उसका मेजॉरिटी पोर्शन is being released as an interest payment. तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करने के लिए. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर. देन इन्फ्लेशन रेट, व्हाट इज द प्राइसिंग लेवल्स. अगर प्राइस ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा राइज कर रहे हैं तो इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर होगी, लोकल के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, और ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ स्लो डाउन करेंगे और स्टैगफ्लेशन के सिनेरियो होंगे जहाँ पे स्टैग्नेशन भी आ जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, और साथ साथ हायर प्राइस राइज भी हो सकता है. तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. देन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, वेदर हमारा टोटल नेट इनफ्लोज हो रहा है कैपिटल एंड करंट अकाउंट का टोटल, और या नेट आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा नेट इनफ्लो हो रहा है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेगा, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा होगा तो हमें एक्सटर्नल शॉक्स को कुशन करने में मदद मिलती है, क्योंकि हम कोई भी ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस होगा डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो ईजिली कर सकते हैं अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट एक पर्टिकुलर लेवल पे होगा. लेकिन अगर वो एक्सचेंज रेट, अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुआ क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत फास्ट में डिप्लीट करेगा, जिस कारण से हमारा ट्रेडिंग पे असर पड़ेगा एंड आवर इकोनॉमी मे नॉट गेट अ बूस्ट. दिस इज द थिंग. देन वन अनदर थिंग इज डिफॉल्ट हिस्ट्री. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये चेक करते हैं क्या पास्ट में इस कंट्री ने कभी डिफॉल्ट किया है, किसी गवर्नमेंट का जब पेमेंट मेच्योरिटी डेट आया उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट को वापस किया कि नहीं. दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर विच इज सीन बाय दिस सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. एंड देन एक्सटर्नल डेट पोजीशन, ओवरऑल गवर्नमेंट का कितना एक्सटर्नल डेट है. डेट गवर्नमेंट दो तरीके से लेती है, एक पब्लिक डेट लेती है जो अपने गवर्नमेंट इंटरनली लेती है, अपने पब्लिक से लेती है. फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स इशू किया, उनके पब्लिक ने उस बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोन बोरो किया. या दूसरा तरीका हो सकता है कि उस पैसे को एक्सटर्नली लिया, बॉन्ड्स इशू किया और फॉरेन इन्वेस्टर ने उस पर इन्वेस्ट किया, तो दैट बिकम्स एन एक्सटर्नल डेट. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर विच इज गेज्ड बाय द एससीआर एजेंसीज. अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो होते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. हमें पता है कि बस इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर सकती किसी कंट्री को, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं होगी. एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी गिव्स अ प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द विजन एंड पाथ थ्रू विच द इकोनॉमी वुड प्रोग्रेस, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर. देन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन. अब इन्वेस्टमेंट राइट्स क्या है, इन्वेस्टर्स का कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, हाउ ईजी इज फॉर द इन्वेस्टर टू टेक बैक द इन्वेस्टमेंट. अब किसी ने $100 बिलियन इन्वेस्ट किया for this promise that he will receive certain investment return, but what about at the end of investment period if it wants to take back the investment, whether he is able to do it or not. इसी में हमारा कॉन्सेप्ट आता है and that is known as capital account convertibility. कितना easily capital move कर सकता है कि नहीं, this is an important indicator. Then rule of law, obviously law of the land is followed or not, क्योंकि अब कोई भी ऐसा डिसीजन हो, कोई भी इस तरह का आर्बिट्रेशन हो या कोई इस तरह का फाइनेंशियल इश्यूज हो, जिसमें देखा जाता है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको अदर किया गया कि नहीं. और यहीं पे हम देखते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉज एक्ट्स एज एन इनहिबिटर. इट मीन्स कि किसी गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पास्ट में जाकर कोई इन्वेस्टमेंट पे टैक्स तो नहीं लगा दिया, कैपिटल गेन्स टैक्स इस तरह का. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई रूल ऑफ लॉ जो डिफाइंड था, जो प्रॉमिस किया गया था, उस हिसाब से वेदर इट इज अदर टू और नॉट. Then corruption, what is the level of corruption, and ease of doing business, whether the country is easier in terms of doing business or not. These are the non-economic indicators which are also equally given due importance. अब हम बात करें इंडिया का,
So this rating upgrade has happened after 2007. So in 2007, India was affirmed a rating of triple B minus, and triple B minus is the lowest investment grade. It was the lowest investment grade, although we have told you that there are two grades, investment grade and speculative grade. But at the lowest end of investment grade, India's government bonds were actually ascribed to. But after 18 years, now they have got a rating of BBB. अब इस तरह से चलता है BBB minus, BBB, and then the next upgrade, if that happens, that would be BBB plus. Then the country would move into A, A minus, A plus, AA minus, AA plus, AAA minus, AAA plus. This is how the progress would happen. And if the country's sovereign debts are rated at AAA plus, that means that country has the highest rating. Even the US does not have AAA plus sovereign credit rating. So this is what has happened, and what are the parameters on which this decision was taken. We'll discuss that. First parameter was the real GDP growth rate. After COVID, which in 2020-21 we saw a negative growth rate of minus 5.8%, the economy zoomed back, and over a period of 4-5 years it has been averaging at 8.8% real GDP growth rate, and that has prompted the agency to look at India's overall growth story. At the same time, there is a projection that over the next 3 years, the average growth rate would be 6.8%, and that would be the highest amongst the G20 major nations. And that shows that India is on a trajectory to achieve this 5 trillion status by 27-28, and also has a long-term growth story intact within it. Then capital expenditure. After the 2021, the government of India jacked up its capital expenditure in terms of total infrastructure spending, and it reached to 3.1% of India's GDP, amounting to more than rupees 11 lakh crores. And that shows that now, out of the total budget which is announced, a good share is going towards capital expenditure, and that shows that these investments are productive for the economy, because that would add up to further rounds of value addition in the economy. Then the government has stuck to its commitment of fiscal consolidation. At the time of COVID, the fiscal deficit which the union government experienced was in the range of 9%, and it has been systematically brought down to less than 4.4 or 4.8% last year, and this year the government has committed to achieving 4.4% as overall fiscal deficit. To add to that, if we talk about the state government's fiscal deficit, then we come across general government. General government means state governments and central government combined. So their fiscal deficits have moved from 11%, it has moved down to 7%, with a long-term commitment towards 6.6%, which is well within manageable range, because the country is developing, and it is very much important for India to use that deficit money for productive purposes. Then if we talk about the current account deficit, in the balance of payment part, it is well below 0.7%, precisely at 0.6%, and if the current account deficit is less than 2%, then that is well within manageable range, and that shows that India is perfectly cushioned as far as its trade with the rest of the world is concerned. Then inflation. After all the rate hikes and all these things, our inflation, be it the core inflation or the headline inflation, it has moved back to in the range of 2 to 3%, and that shows that now the inflation would be more predictable, and inflation in India is precisely even more predictable than what is there getting experienced in some of the like United States or Europe, and that shows that India has done well on the front of price stability without hampering the growth prospects of India. And that is why this year it is expected that there would be further rounds of rate cuts. Already we have seen more than 1% of rate cut, moving down from 6.5%. The repo rates at the time of peak, it was 6.5%, it has moved back to 5.5%, and there are expectations that it would further move to 5%, and that is good for the economy, because अगर rate कम होते हैं तो business
बूम करेगा क्योंकि क्रेडिट अपटेक होता है, क्योंकि जब रेपो रेट कटता है तो लेंडिंग रेट्स भी कटते हैं। लेंडिंग रेट्स कटने से क्या होता है, बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एंश्योर दैट देयर इज मोर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। Now, if we talk about what would be the benefits for the economy, because obviously this rate cut is not a mere tokenism or something to be boasted upon. There is certain tangible benefits for the economy. For the first benefit that we talk about is lower borrowing cost. If sovereign credit rating gets upgraded, then the government bonds, the coupon which would be offered on new fresh debts which would be issued will carry lesser interest. अब लेस इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को अब आसानी से लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगा, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगा। इवन दैट वुड पर्कुलेट इनटू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आल्सो, बिकॉज व्हेन दे विल गो आउट इट वुड बी एक्सपीरियंस दैट द कंट्री इज साउंड, स्टेबल, एंड देयर वुड बी मेनी फॉरेन इन्वेस्टर विच वुड सब्सक्राइब टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। देन देयर वुड बी मोर FDIs and FIIs and FPIs which would get interested and start investing in India, because they will feel that now their investment is safe. As I told you, it's all about the perception of investment, whether the money is safe or not, whether they will be able to recover back their principal amount or not, and if they have this confidence within the particular investment or about the growth story of India, then there would be many more money which would flow into India, and this would also mean India's investment rate will go up. What does this mean? See, investment rate is directly related with the overall GDP growth rate. We know that investment rate, then incremental capital output ratio defines the overall GDP growth rate. Currently India's investment rate is in the range of 31%, 30 to 31%. And with the capital output ratio that we currently have, we cannot achieve more than 7%. To achieve 8% growth rate, we need an investment rate of 35%. So there is a shortfall of 4%. Now that 4% investment rate basically कितना amount 100 rupees अगर GDP में होता है, उसमें 35 rupees is all about the investments. Rest all consumption and other exports and imports. For that 35 rupees, majority of the chunk is coming from households or the government. But if foreign investment has to be pulled in, then this for sovereign credit rating upgrade will give a good impetus. It will give boost to the confidence of investors to come and fill this 4% gap. Then reduction in currency volatility. Obviously what would happen, that if India's investment climate improves, then many more countries would start engaging with India. Then they will be ready to accept India's rupee, and that is what the long-term agenda is. We want to internationalize our rupee. We want to increase rupee-based global transactions or global trade transactions, and that would stabilize and reduce currency volatility, because currently our currency volatility is interlinked with whatsoever decision the big countries like United States or China take. But if our country gets integrated with the global supply chain, our country gets integrated in terms of the transaction which they start taking rupee as one of the preferred currency, then the volatility in currency would start reducing, and that would be good for the economy. Then there's a reward for reforms. We have seen that over the past, I'll talk about from 1991 we have taken many more reforms, and in the past 10-11 years we have taken reforms which have been acknowledged by many of the global financial institutions, and if the rating upgrade would not have happened, then this would have been a disservice. अब कोई भी आप हमने कोई रिफॉर्म्स किया, उसका हमने गवर्नमेंट पे, हमने अपनी इकोनॉमी पे देखा अच्छा परफॉर्मेंस है, then it has to be rewarded with, and that is a kind of reward which has been given by the global rating agency in terms of the rating upgrade. And there is expectation that now India is on a sustainable growth path, and there would be further rounds of many more upgrades, because never ever in the history of the world where the economies, which is the fourth largest economy, India is the fourth largest economy, still India's rating is BBB. However, if you talk about in the past, if an economy had this fourth ranking in terms of nominal GDP, it used to have this rating of more than AA. And that shows that India, there is many more rooms, there are many more ladders there are many more steps to be covered, and that gives an opportunity for further rounds of rating upgrades.
then there could be certain spillovers because of this confidence, this buzz that okay, India is not a dead economy as being told by one of the one of the major political leaders. It gives an affirmation that whatsoever decisions that we have taken over the past 15 years, 20 years, we are reaping the dividend, and we are well in line to achieve this growth target and achieve the developmental status of a high income country by 2047. At the same time, our banking, private capex and infra finance will get a spillover because the investments would start pouring in because of this rating upgrade. So this was all about the current video about the sovereign credit rating upgrade which India has seen. Thank you.